This day marks the end of a pregnant phase in our national history, and it should also be the beginning of a new and a noble era. Let us impress the minorities by our word, deed and thought that as long as they fulfill their duties and obligations as loyal citizens of Pakistan, they have nothing to fear. Pakistan Zindabad. था 1940 में 23 मार्च को जब मिंटो पार्क लाहौर में इजलास हुआ, तो उस इजलास में दीवान बहादुर एसपी सिंगा और चौधरी चंदूलाल, एफई चौधरी, फजल इलाही वगैरह ने इन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की हिमायत की थी। Greatest headlines of the century. Dateline India, August 15th, 1947. In a moment, the story. It was the hot summer of 1947. The British Empire was crumbling after their success in Second World War. India, one of the empire's most important colonies, was slowly breaking away. For most of the 19th century, the British had problems with rising Indian nationalism and freedom movements that were supported by Mahatma Karamchand Gandhi. Gandhi had strongly believed that through non-violence, India would be free of British Raj. However, Gandhi had to face the Muslim League, headed by Muhammad Ali Jinnah, who instigated for separate homeland for India's minority religion, the Muslims, which was to be called the State of Pakistan. The British and the Congress were reluctant to accept the partition of India, but eventually they accept the partition proposal, the June 3rd Plan, presented by the last British Viceroy to India, Lord Louis Mountbatten. We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have performed. The streets of Karachi, chosen capital of the new state of Pakistan, present a peaceful aspect as the 200-year-old British rule enters its final hours and the Constituent Assembly building makes ready for its first parliamentary session. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike. The partition proceeded. The areas composing of most of Muslim majority were allocated to Pakistan. This included partitioning Punjab in the west and Bengal in the east. The partition came with a heavy price for Muslims, Hindus and Sikhs. Millions migrated to their respective homeland in what was one of the largest migrations in the history of modern world. But tragedy ensued when violence occurred between Muslims on one side and Hindus and Sikhs on the other. I was very small, I was just a kid. But my parents were very much involved in social work. My father was in government service, but my mother was used to help UCH. UCH at that time was in FC College. The two hostels had been converted into a hospital, United Christian Hospital, and they helped refugees. Most of it started with refugees who came from across the border. And they were poor and ill and sick, and many of them were undernourished, and they were suffering from all kinds of problems. So my mother used to go and help the doctors and the nurses because they were
they didn't have so much help, and the refugees were more than so my mother and a few other ladies, Christian members, would go there to roll bandages, to do all kinds of odd things that the nurses needed help for. More than 1 million people lost their lives in 1947 in one of the worst communal violence in history of the world. Not all of the Muslims left India for Pakistan. Similarly, not all of Hindus and Sikhs alike left Pakistan for India. Other religious minorities such as Parsis and Christians did not participate in the migration to Pakistan nor India. They were not threatened or even forced to evict their homes. Some of the minorities were supporters of Pakistani movement. Pakistan, with the vast majority of people being Muslims, has 20% of the non-Muslim population. हरि ओम शांति 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 ओम ओम नमो वाल्मीकाय नमः। मैं भगत लाल खोखर वाल्मीकि मंदिर नीला गुंबद लाहौर से कि अगर मैं ये कहूँ कि हम माइग्रेट होकर आए हैं तो ये कतन नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्योंकि 12 दरवाज़ों के एक जगह अंदरून टंगसाली गेट है, वहाँ के मेरे ननियाल हैं, और उसके साथ ही आगे शायद मिठा वहाँ के मेरे ददयाल हैं। और हम बेसिकली बड़े वसूख से कहते हैं कि हमारा शजरा देखो, हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान में ही हमारे बड़े नस्ल दर नस्ल यहाँ चल रहे हैं। और इस मंदिर के हवाले से कि ये इतनी पुरानी तारीखी ये मंदिर है, और हम आबाओ जदाद से ही सेवा संभाल इस वाल्मीकि मंदिर की करते हैं। The non-Muslim live their everyday lives as common citizens of Pakistan and are free to practice their religion. They are easily blended with the population that only their place of worship and wearing their religious insignia can only distinguish them. मेरा नाम बनारस लाल वाल्मीकि है। उस वक़्त कोई अक़लियती सियासी पार्टी नहीं थी, सिर्फ अछूत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, जिनके जोगेंद्र नाथ मंडल पहले वज़ीर कानून पाकिस्तान बने। My name is Taranjeet Singh. By profession, I'm a TV anchor and creative film director. Well, पाकिस्तान की अगर आप देख ले, हिस्ट्री देख ले या करंटली देख ले, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का बनना और पाकिस्तान का इस फ्रेज में जो डेवलपमेंट है, ये दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंट है। उसमें जहां आप देखते हैं कि पाकिस्तान एक मज़हब के नाम पे मुल्क बना, वहां सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तान की जो अंदर रह गई थी, उन्हें पाकिस्तान के साथ रहने की को तरजीह दी, पाकिस्तान का साथ दिया, और फिर उससे लेके अब तक जो है सिख कम्युनिटी की बहुत सी कंट्रीब्यूशन इस लैंड के लिए। आप दयाल सिंह मजीठिया का नाम ले लें, जिन्होंने पहली बार लाहौर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए, और लाहौर और पंजाब को एजुकेट करने के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन रखी। The movement for Pakistan was started in the early 1940s. It was on March 23, 1940. The Muslim League gathered at the Minto Park with Liaquat Ali Khan and the founder of the nation, Muhammad Ali Jinnah, chairing the session for a resolution of separate homeland for Indian Muslims. The resolution was propagation for one state for Indian Muslims, which was to be called Pakistan. The resolution came to known as Lahore Resolution, but was popularly called Pakistan Resolution, which was authored by one of the most prominent personality of pre-partitioned India, Sir Zafarullah Khan. मेरा नाम अशोक कुमार खत्री है। बेसिकली मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ और थरपाकर रीजन है मिठी, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि रेजोल्यूशन का मेन मोटो ये था कि हम लोग माइनॉरिटीज़ को एक सेफ साइड देंगे और उन्हें जो कल्चर और रिलीजन उनके इवेंट्स होंगे उन्हें सेलिब्रेट करने दिया जाएगा, और उन्हें एक पूरी आज़ादी होगी कि अपने मुल्क में रहकर वो अपने इवेंट को सेलिब्रेट करें। माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर माइनॉरिटीज़ का रोल प्ले देखें अगर हम लोग, तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन का हिस्सा थे, जो फर्स्ट लॉ और लेबर के मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ पर। Today, Pakistan commemorates March 23rd every year, calling it Pakistan Day. But the question remains the same.
If India is to be divided, what would happen to those people who are not Muslims and choose to remain in Pakistan? You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. लेकिन जी तहरीक पाकिस्तान में मसीहियों ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया और कायद-ए-आज़म का और मुस्लिम लीग का साथ दिया। जो क्रिश्चियंस थे वो ये सोचते थे कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों एक सेम पेज पे हैं और हिंदू हम दोनों से नफ़रत करते हैं। तो इसलिए हमें हिंदुस्तान को अप्ट करने की बजाय पाकिस्तान को अप्ट करना चाहिए। और चूँकि हम सेम पोजीशंस में सेम हालात में रह रहे हैं और जो हिंदुओं का छूत छात का सिस्टम है हम दोनों कम्युनिटीज़ उसके विक्टिम हैं, इसलिए जब हम पाकिस्तान में शामिल होंगे तो हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। एक तो वजह ये थी। Despite not choosing to leave Pakistan for India, the religious minorities of Pakistan had to face turbulent times, but the spirits of patriotism for Pakistan was not shaken. When I came back, suddenly, when I had the book launch, this was in 2013, the government had asked me, we want you to make you a motasib. But I said, I don't want anything, I'm retired, I don't have anything to do with any work now. But they wanted a person who was good in administrative, and they wanted a person who had a long time in administration. And I hope that from now on, from the 23rd of March, the government will take serious note of helping the minorities and establishing themselves to make them really feel that Pakistan is doing something for the minority community by giving them confidence, by building them up, because they are people of the same soil. They've been born, brought up, grown up, and this is their mother country. लॉ की मैदान में देखें तो जस्टिस कॉर्नेलियस का नाम जो है वो आज भी हर बंदा जो है वो बहुत एहतराम से लेता है, जो उन्होंने खिदमात दी हैं। फिर हाल ही में जस्टिस भगवान दास जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनकी खिदमात जो हैं वो नाकाबिल फरामोश है। अगर हम ख्वाजा पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर बेशुमार नाम जो हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन जनाब फैसल चौधरी साहब का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है, जिन्होंने ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान में अपनी खिदमात दी, बल्कि यहाँ पर समाजी हवाले से उन्होंने बहुत जो है वो अपना रोल अदा किया है। Pakistan is a nation that has pluralistic society. The minorities have equal status among their Muslim compatriots. पहली जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि वो तमाम हीरोज़ जिनका ताल्लुक माइनॉरिटीज़ से है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनको सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी मुआशरा आगे लेके जाने के लिए ज़रूरी है कि इम्तियाज़ात का ख़ात्मा किया जाए। रियासत की नज़र में तमाम शहरी बराबर होने चाहिए। हम सब लोग बड़े खुश व खुरम इधर यहाँ रह रहे हैं, हमें कभी भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बड़े आज़ादाना तरीके से अपने त्यौहार भी मनाते हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी करते हैं। और इस मंदिर में बैठे हुए मैं भी ये दुआ करूँगा कि दो कर जोड़ करो प्रार्थना पाकिस्तान के लिए, सारे जहान के लिए। पाकिस्तान से प्यार करो, इंसानियत से प्यार करो। ऐ भगवान जीव है पाकिस्तान। ओम नमो वाल्मीकाय नमः। The white in the flag of Pakistan represents the minority. Therefore, acknowledging that despite the difference of religion or creed, they are all a nation of one flag.